Today's topic is fertilization. So, in previous classes we have already discussed regarding the male gametophytes, female gametophytes. Okay, so today's topic is fertilization. So, what is fertilization? Fertilization is the fusion of, male and female nuclei, okay. So मेल न्यूक्लियस एवं फीमेल न्यूक्लियस रो मिलन बा फ्यूजन को कहा जाए फर्टिलाइजेशन. सो दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर in 1884. So this process fertilization it actually occurs in embryo sac. So what is embryo sac? Embryo sac, look, this is the ovule. The whole structure is ovule, and this one is the embryo sac. So embryo sac actually fertilization will occur. You just remember the structure of ovule. Inside the ovule, embryo sac is there. Embryo sac contains what are the cells that is there inside the embryo sac. This is the egg. Okay, there are two synergids and three antipodals. So fertilization will occur inside the embryo sac. Embryo sac bhitere fertilization hebo. Okay. So fertilization is a complicated process, or it is a very long process. Okay, since it is an angiospermic plants, or we are studying the angiospermic plants, fertilization process टा angiosperm रे केमती होजे सेटा जदि पढुछु आमे जेहेतु एटा गोटे complicated process टा आउ यार male gametes. Okay, male gametes of angiosperm are motile. They are motile माने सेमाने गतिशील. Male gamete सेमाने गति करि पारिबे गोटे जगारु आ गोटे जगाको. Okay, so this is the fertilization. What is fertilization? Where fertilization occur? Okay, so next we shall discuss the details regarding the fertilization. So fertilization can occur in different steps. Okay, so first the fertilization will involve the transfer of pollen grain. Okay, pollination. What is pollination? That we have already discussed. Means transfer of pollen grain from the male plants or male flower to the female flowers. Okay, so I don't think that it is very necessary again to discuss regarding pollination. So next we shall discuss what will happen after pollination. Okay, so pollination pore fertilization hobo. So fertilization ra first step of fertilization hochi germination of pollen grain. Pollen grain on stigma and growth of pollen tube. Okay, so what will happen in this step? Okay, first the pollen grain will come and it will sit, or it will stick on the stigma. You just remember the structure of pollen grain. It contains two layers, exine and intine. Okay, outer layer exine and inner layer intine, and there is a nucleus inside the pollen
grain. But before pollination, there are certain changes that is occurring inside the pollen grain that we have already discussed while studying the development of male gametophyte. Male gametophyte रो development समय आम पढ़ीचे जे pollen grain भितर थिबा ई न्यूक्लियस टा माने भाग हे करी माने डिवाइड एंड रीडिवाइड हे कि केते टा सेल हेला परे सेटा pollination हुए सेटा आम ऑलरेडी पढ़ीचे तमे माने मने पको एक्चुअली ओके 2 cell stage and 3 cell stage, mainly 2 cell stage and rarely 3 cell stage रे pollination टा हुए actually. Okay, you just remember. So first there will be the pollen transfer of pollen grain to the stigma. After falling on the stigma will recognize whether the pollen grain is of correct type or the wrong type. Okay. स्टिग्मा से प्रथमे ताको चिन्हिब जे एडा आमर एक्चुअल पोलेन ग्रेन ना एडा को आमे रिजेक्ट कर दबा उचित सेडा माने उपयुक्त पोलेन ग्रेन ता पड़ी छी तो सेडा से फर्स्ट से निजे कोन करिवो से माने चिन्हिब एक्चुअली सेडा भी आमे पड़ी सारी छे इंटरेक्शन ऑफ पोलेन ग्रेन्स इंटरेक्शन पोलेन ट्यूब इंटरेक्शन पड़ी छे ऑलरेडी. सो जदि गोटे उपयुक्त सुइटेबल पोलेन ग्रेन स्टिग्मा रे पड़े तापर कौन हम सेटा आम एक्चुअली देखा. ओके दैट विल लीड टू द जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन्स. जदि सुइटेबल पोलेन ग्रेन पड़े तापर कौन हम ये पोलेन ग्रेन रो जर्मिनेशन टा हम. सो जर्मिनेशन माने कौन एक्चुअली इट विल फॉर्म पोलेन ट्यूब. इट विल फॉर्म पोलेन ट्यूब. सो व्हाट इज पोलेन ट्यूब? पोलेन ट्यूब होची एडा तुमारो गोटे एक्साइन आउटर लेयर इंटाइन होची इनर लेयर. सो एडा होची देख तुमार हैला एडा होची पोलेन ग्रेन रो आउटर टा होची एक्साइन भीतर टा होची इंटाइन. ओके आउ एक्साइन टा कंटिन्यूअस न थाए. एक्साइन गोटे जगह रे डिस्कंटिन्यू होकर थिबो सेथिरे खाली से जगह खाली इंटाइन थिबो सेडा होची जर्मपोर. सो से जर्मपोर जगह रे इंटाइन टा एमती ट्यूब फॉर्म करिवो. माने एडा देखो एडा होची इंटाइन एमती बाहर को पले आसीबो. एडा होची पोलेन ट्यूब. पोलेन ट्यूब. ओके सो जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन ऑन स्टिग्मा रे पड़िला परे से कौन करिवो जर्मिनेट करिवो. ओके सो जर्मिनेट करिया पई एक्चुअली किछिटा कंडीशन दरकार. एक्चुअली देख माने पोलेन ग्रेन स्टिग्मा रे पड़ी सारला परे से कौन करिवो एथि जोदी स्टिकी मटेरियल्स थिबो द स्टिकी मटेरियल विल कंटेन enormous quantity of water. Okay, so that water will be absorbed by the pollen grain. Pollen grain से water को absorb करिवो टिके फुली जबो swell करि जबो. ओके swell करि सारला परे से pollen grain produce करिवो बा pollen grain form करिवो. बुझि पारला. सो केतेटा pollen tube form हे पारिबो. Usually one pollen tube. Usually one pollen tube is formed in most of the cases, but rarely there may be the formation of more than one pollen tube may also be formed. So the condition means if one pollen tube is formed, then that is called suppose there is one pollen tube in a plant. If one pollen tube is formed, then that is called monosyphonous. Okay, monosyphonous means formation of one pollen tube. If more than one pollen tube जदि मोर देन वन पोलेन ट्यूब फॉर्म हैला ताको कहा जाउछि पॉलीसाइफोनस
साइफोनस ओके मोनोसाइफोनस आ गोटे हूँ पॉलीसाइफोनस सेटा क्या कह जाए तुम मैंने मन रख से सर्ट क्वेश्चन आसीपे बुझीगला मोनोसाइफोनस रे किसी प्रोब्लेम नहीं जदि पॉलीसाइफोनस है माने गोटे जगार गोटे पोलेन ग्रेन मोर देन वन पोलेन ट्यूब फॉर्म कला मन कर है इट मे बी अप टू 10 10टा पर्यंत ये पोलेन ट्यूब फॉर्म करि पारे 10टा पोलेन ट्यूब फॉर्म कला परे भी केवल गोटे पोलेन ट्यूबटा मेल गैमेट्स को से कैरी करिवो ओके एंड द रेस्ट पोलेन ट्यूब्स मे बी डीजेनेरेटेड से बाकी पोलेन ट्यूब सब धीरे धीरे उभे जीवे डीजेनेरेट करि जीवे ओके सो वी शुड डिस्कस द मोनोसाइफोनस कंडीशन एक्चुअली ओके मोनोसाइफोनस कंडीशन टा हमें डिस्कस करबा कारण पॉलीसाइफोनस टा गोटे रेयर प्रोसेसटा ओके सो पोलेन ट्यूब एठी फॉर्म है कि धीरे 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 एमती आकु आकु बढ़ी बढ़ी जीव थ्रो स्टाइल स्टाइल देकी ये धीरे धीरे एमती बढ़ी बढ़ी जीव एमती बढ़ी 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 जीव सो ये जो स्टाइलटा इन सम फ्लावर्स द स्टाइल आर होलो माने पोला भी थाई पारे और in certain cases there it is filled up with the different tissues or it may be of solid type you can say okay hollow type ro style भी पाई परिबो आउ solid type रो style भी थाई पारे so hollow type रे किछि असुविधा नै पोलेन ट्यूब आराम से पले आसीबो किंतु solid type रे कोन करिया को ताकू रास्ता तयारी करबा को पड़िबो रास्ता तयारी केमते तयारी करिवो से जो टिश्यू गुडा को सेल गुडा को थिबे ताकू डिजॉल्व करबा को पड़िबो ओके सो डिजॉल्व केमती हेबे सेटा गोटे एंजाइम टे सिक्रेट करिवो सेटा होचे क्यूटिनेज एंजाइम कोन करिवो ए सब टिश्यू मान को डिजॉल्व करिकि से रास्ता तयारी करी पोलेन ट्यूब तो आको आको गति करिवो किंतु पोलेन ट्यूब भितरे कोन थिबो देखो सो इनसाइड द पोलेन ट्यूब एक्चुअली देयर विल बी 4 cells okay 2 male gametes, 1 tube nucleus and another one is vegetative cell. Okay, so there are 4 cells inside the pollen tube and along with the pollen tube these cells will also move towards the ovule. Okay, so in this way the pollen tube will move forward carrying the tube nucleus, vegetative cell and the 2 male gametes. So after the pollen tube reaches the ovule, ovule को पहुँचला परे pollen tube टा ए जो आमर vegetative nucleus टा degenerate करी जीवो vegetative cells जोटा अछि सेटा उभे जीवो ओके so next process होची entry of pollen tube into ovule next होची जो pollen tube टा ovule भीतर को enter करिवो next step so see after reaching to the ovule the pollen tube will try to enter into the embryo sac so entry of pollen tube may be of 3 types first type is the protogamy so what is protogamy entry of pollen tube through micropyle this is the micropylar region of the ovule so entry of pollen tube through this micropyle it is called protogamy second chelazogamy entry of pollen tube through chelazal end this is the chelazal end entry of pollen tube through this chelazal end it is called chelazogamy if the entry of pollen grain is
from the integument or other than the micropyle and chelazal बाकी सब जे कौन स्थान से जदि एंटर कला सेटा हूँ मेजोगेमी मेजोगेमी दिस इज थ्रो इंटेगुमेंट और इंटेगुमेंट देकरी जीव और फनिकिल फनिकिल थ्रो रु जदि एंटर कला एटा हूँ मेजोगेमी सो जहाँ भी हो से जे कौन प्रोसेस हो सेटा प्रोटोगेमी हो चेलाजोगेमी हो कि मेजोगेमी हो से एंटर कला कौटी की एम्ब्रियो सेक भीतर को से एंटर कला परे कौन हम एंटर कला परे द पोलन ट्यूब्स द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ट्यूब्स विल बी डिस्चार्ज इनटू द एम्ब्रियो सेक भीतर को डिस्चार्ज हो कौन सब पोलन ट्यूब भितर जहाँ सब अच्छी वेजिटेटिव सेल तो डिसइंटीग्रेट करी गलानी ट्यूब न्यूक्लियस सांगे अच्छी किंतु बिफोर डिस्चार्जिंग देयर विल बी द डिजेनेरेशन ऑफ द ट्यूब न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल से माने खाली कौन करेंगे माने सांग देबे एक्चुअली है सांग देबे माने सांगे जीवे आ जते बेले एठी डिस्चार्ज हबो खाली दुईटा मेल गेमेट एका खाली डिस्चार्ज हबो कोठी की तुम्हारा एम्ब्रियो सेक भीतर को बाकी ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव cells they will be degenerated or they will be disintegrate. Okay, so this is the entry of pollen tube. So next process is the double fertilization or you can say the syngamy. First 3 number step is the syngamy. Okay, what is called syngamy or it is also called true fertilization. You see, okay, there is one egg inside the embryo sac. So how many male gametes are there? 2 male gametes are there. So 2 male gametes are discharged into the embryo sac भीतर के दुईटा male gamete छड़ा हैला. So से भीतरू first male gamete plus the egg. First male gamete will fuse with the egg, means there will be haploid set of chromosome in male gametes, haploid set of chromosome in egg. So it will lead to the formation of what? Zygote, and the zygote will be diploid, that is 2n. This process means fusion of first male gamete or one male gamete with the egg leading to the formation of zygote. This process is called syngamy or true fertilization. बुझिएला. Next is the double fertilization. Chair number step, double fertilization. So what is double fertilization? You see, there are 2 nuclei at the center of the embryo sac. These 2 nuclei are called what? Polar nuclei. First polar nucleus plus second polar nucleus. ये जो दुईटा पोलार न्यूक्लियस अच्छी से माने फास्ट फ्यूज हेबे. ओके, फर्स्ट पोलार न्यूक्लियस प्लस सेकेंड पोलार न्यूक्लियस, इट विल बी सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल. सेकेंडरी न्यूक्लियस और इट इज कॉल्ड central cell. Okay, so first these 2 polar nuclei will get fused to form secondary nucleus or central cell. These are 2n. Okay, next the central cell or you can say secondary nucleus
it will fuse with the second male gamete to form endosperm or primary endosperm nucleus. This is 3n. Okay, central cell 2n, male gamete n, so it will be the 3n. Okay, so double fertilization, this is called double fertilization. Why this is called double fertilization? This is called the double fertilization because there are two types of fertilization. First, the true fertilization, second is the this fertilization. Okay, or this is called the double fertilization because the first and second polar nuclei they will fuse. Next, after the fusion of the polar nuclei, the fusion product of polar nuclei will be fused with the second male gamete to form the primary endosperm nucleus. This is called double fertilization. दुई प्रकार fertilization है तो सेतिपाई याको double fertilization बोली कि कुआ जाउछि. So primary endosperm nucleus it is triploid. एटा होछि क्वेश्चन तुमर शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे देखबो. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होछि ट्रिप्लॉइड. ओके, so another term is also called triple fusion. Another term, this is called the triple fusion. Triple fusion. What is triple fusion? This process is called triple fusion. Okay, since there are the fusion of 3 sets of chromosomes, this is called triple fusion. Okay, so double fertilization, it is the characteristic features of angiosperm. Angiosperm मानंकरे केवल double fertilization हुए एवं अन्य प्लांट मानंकरे एडा हुए नहीं. So double fertilization actually, what is double fertilization तुम्हें कहले कहबो कि double fertilization angiospermic plants रे हुए जेहेतु यार दुई प्रकार गैमेट रहउछि, दुईटा मेल गैमेट रहउछि. So दुई प्रकार fertilization हबो. First male gamete will fuse with the egg, second male gamete will fuse with the central cell. That is why it is called double fertilization. Okay, so this is the details regarding the fertilization. So next class we shall discuss the development of embryo, seeds, okay, fruits. So many things are there to be discussed.